नमस्कार वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। लास्ट क्लास रे आमे class-8 साइंस NCERT बुक रो chapter-1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को कंप्लीट करथिले किपरि क्रॉप प्रोडक्शन करा जाय तार 7 स्टेप्स कोन थिला एवं आमे कोन सिखिले सेही सब्जेक्ट रो सेटा आमे लास्ट क्लास रे कवर करथिले। ए क्लास रे आमे तार एक्सरसाइज को कवर करबा। सो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि एक्सरसाइज रो। Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Question number 8 is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called as आम जानी कि सेम काइंड ऑफ प्लांट गोटे जगह जब ग्रो करा जाए ताले ताको कहा जाए क्रॉप। सो आंसर टी हबा क्रॉप। सो द आंसर इज क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। सो आम जानी कि ग्रोइंग क्रॉप रो फर्स्ट स्टेपटा होची प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो द आंसर इज प्रिपरेशन। थर्ड क्वेश्चन होची डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। आम जानी तो डैमेज सीड जो मंजी गुड़ा खराब हो जाए से जो गोटे एक्टिविटी आम करते जो कि किसी मंजी नहीं आम पानी में पकई देते जो मंजी गुड़ा भाषिब से गुड़ाक हूँ खराब मंजी और जो मंजी गुड़ाक बुड़की रहा हूँ भल मंजी। सो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। सो आंसर हूँ फ्लोट। Next question for growing a crop sufficient sunlight and dash from the soil are essential. So answer होची कोन water और nutrients necessary from the soil for the growth of the plant. So एटा थिला फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। भलो भाबे देखि नियंतु। इफ क्वेश्चन भलो भाबे देखा जाउनी यू कैन रेफर टू योर बुक एंड डू द आंसर्स। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Match items in column A with those in column B. column A और column B रे मैच मेकिंग करबा। आमे तो मैच मेकिंग रे कोन करबा खरीफ क्रॉप्स को गुड़ाक से प्रथम पचार मैच ए कलम ए रे क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे खरीफ क्रॉप्स। तो को गुड़ा खरीफ क्रॉप्स आम देखा तो खरीफ क्रॉप्स गुड़ाक होती पैडी आउ मेज। सेकेंड रे पचार रबी क्रॉप्स को गुड़ाक। तो रबी क्रॉप्स गुड़ाक हूँ व्हीट ग्राम एंड पीज। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कहते केमिकल फर्टिलाइजर्स आम जाने यूरिया सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा एगुड़ा हूँ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्युअर्स को गुड़ाक ऑर्गेनिक मैन्युअर्स गुण होती एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। एटा थिला हमर मैच मेकिंग आंसर। मैच ए विथ मैच बी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 रे अच्छी गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द ईच। खरीफ क्रॉप को गुड़ाक और रबी क्रॉप को गुड़ा। खरीफ क्रॉप हूँ पैडी और मेज। रबी क्रॉप्स होती व्हीट ग्राम पीज। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रे पचार write a paragraph in your own words on each of the following. Preparation of the soil. The preparation of the soil माने कौन? The preparation of the soil is the first step in agriculture. So preparation of the soil is done to loosen the soil and which is essential for the root penetration into the soil. This allows the roots to breathe easily and loosening of the soil is necessary for the growth of the plant. It also helps in the growth of the earthworms and microorganisms and which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. एटा बुक रे भलो भाबरे एनालाइज कर लिखा जाइछि। सो एटा एई सब पॉइंट्स एतरे इंक्लूड करा जिवो। Loosening of the soil brings nutrient to the soil which is essential for the growth of the plant. एई सब जिंस लिखा जिवो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल रे। सेकंड क्वेश्चन पचारछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हम जानले। सेकंड क्वेश्चन हमर पचारछि सोइंग। सोइंग टी कौन? We know that sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected by the farmers before sowing it.
After selection of the healthy seeds, sowing is done by either traditional methods or by using the equipment such as seed drill, etc. So ये दुईटा पॉइंट आम लिखा गोटे पॉइंट कौन लिखा ना सोइंग आम दुईटा प्रोसेस यूज करें गोटे हूँ ट्रेडिशनल मेथड आ गोटे हूँ मॉडर्न मेथड बा यूज ऑफ द सीड ड्रिल से दुईटा जाक यूज करी आम सोइंग करदे तार डिटेल्ड एनालिसिस आम बुक लिखी देचे आप बुक देखिए लिखिपारे ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ वीडिंग। तो वीडिंग होती कौन unnecessary and unwanted plants near the crops grown by the farmers. The weeding ने कौन करा जाए removal of the unnecessary plants from the field is called as weeding. And weeds कहीं weeding रे necessary था because weeds compete with the crop plants for nutrition and which becomes a threat for the plants to grow. So सेति पाई हमारा weeding टे necessary था। weeding पाई कि हमारा कौन यूज करा जाए weedicides रो यूज करा जाए। Some weeds are poisonous to animals and humans. Tilling is a common method that helps to remove the weeds before sowing crops, and manual methods like the physical removal of the plants are also used to remove weeds. Weedicides are sprayed to get rid of weeds, but this method may affect the health of the farmers because the chemicals used are weedicides. So weed removal process केमिति रही है सेटा हम देखिए जान। नेक्स्ट आम देखा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हूँ कौन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द chaff फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड एज थ्रेसिंग। द थ्रेसिंग इज कैरिड आउट बाय ए मशीन कॉल्ड एज कंबाइन व्हिच इज ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग वेयर द ब्लो ऑफ द एयर इज यूज टू सेपरेट द chaff फ्रॉम द ग्रेन और chaff फ्रॉम द क्रॉप्स। सो यहाँ आम जानी चार्टा जाक जिन केमी एलाबोरेटली लिखिपर बुक कंप्लीट एनालिसिस यार रही आपको रेफर करके देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार हाउ फर्टिलाइजर इज डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। आम जानी फर्टिलाइजर गुड़ा कौन केमिकल मेड और मैन्योर गुड़ाक नेचुरली ग्रो करते सो यहाँ हूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो फर्स्ट डिफरेंस हूँ कौन फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक बट मैन्योर इज ऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर सेकेंड पॉइंट हूँ कौन फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज बट मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट ह्यूमन वेस्ट एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट आम लिखा fertilizers are prepared in factories but manure is prepared in fields बा तुम गोटे पिट करके प्रिपेयर कर एनीथिंग। fertilizers do not provide humus to the soil but manure provides humus to the soil। नेक्स्ट कौन लिखा आम fertilizers are rich in plant nutrients, manures are relatively less in प्लांट न्यूट्रिएंट्स माने से कहला कि फर्टिलाइजरटा अधिक न्यूट्रिएंट्स थाए मैन्योर अपेक्षा मैन्योरटारे लेस न्यूट्रिएंट्स थाए बट मैन्योरटा वाटर पॉल्यूशन कि सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करे ना कि नॉट हार्मफुल फॉर द फार्मर्स और पीपल हु आर कंज्यूमिंग द क्रॉप्स न थाए बट फर्टिलाइजरटा हार्मफुल थाए बिकज सेटा गोटे केमिकल। लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द सॉइल but long term uses of the manure improves the soil fertility। तो यहाँ हूँ फर्टिलाइजर और मैन्योर भीतर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। सो दीटा मेथड ऑफ इरिगेशन से लिखी। द इरिगेशन मीन्स कौन द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर आर as follows। So there are two types of methods, गोटे हूँ ड्रिप इरिगेशन another one is sprinkler system। ड्रिप इरिगेशन कौन the water goes drop by drop directly into the roots and this method is very useful as it conserves the water and also helps in avoiding the weeds। And the second one is sprinkler system means this method is used mainly in uneven land where sufficient water is not available and there are pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals। When water is allowed to flow through the main pipeline under the pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles and it gets sprinkled on the crop as if it is raining। So दीटा मेथड रे हमरो करा जिवो कोन
इरिगेशन नो ये रिप्रेजेंट करा दुईटा मेथड रिप्रेजेंट करा ड्रिप इरिगेशन आ गोटे है स्प्रिंकलर मेथड बा स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइए इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन and what would happen if wheat is sown in the kharif season, what would happen? So answer hame likhiba wheat crops cannot be grown in the kharif season. It may get destroyed if sown in the kharif season because of unfavorable temperature, pest and adaptable conditions for the plants to grow. Because it a kharif season na crop nuhe jodi kharif season ei crop ti ग्रो करा जाए ताहले एटा आइदर तो हबनी बिकज टेम्परेचर जी परिमाण वाटर तापाई दरकार जी परिमाण आडाप्टेबल कंडीशन दरकार एटमॉस्फेरिक कंडीशन दरकार से सब अवेलेबल न थाए। खरीफ crops are grown during the rainy season, hence it is not a wise idea to grow wheat in the kharif season because they cannot get sufficient water to grow. So एटा गोटे वाइज डिसीजन हेबा नाही एंड भल भाव क्रॉप बनी पारिबो नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द फील्ड। यदि कंटिन्यूअस प्लांटेशन हम ऑफ द क्रॉप्स माने क्रॉप पर क्रॉप वन आफ्टर अनदर क्रॉप जदि करा जाए सेटा कौन हुए ना द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल decreased. Okay, so the plants require nutrients for their growth. Without that nutrients plants cannot grow, so continuous plantation of the crops result in depletion of the certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium from the soil, and this results in a decrease in the yield due to the loss of the nutrients. Hence there should be a gap between crops in order to get a good yield, and the gap should be at least 2 crops गैपटा से केतिक रहिबो 2 crops गैप रहिबो ता भितर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। आगुरा हम ऑलरेडी कहि सारिछे व्हाट आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ सुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन। सो सुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन पाई कौन कौन स्टेप्स फॉलो करा जाए सेटा आमे एठी वर्तमान देखिबा। सो आमे जानिछे फर्स्ट स्टेप सब बेले होची कोन प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, एटा होची स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप होची कोन प्लाविंग ऑफ द फील्ड, स्टेप 2 इज प्लाविंग ऑफ द फील्ड। थर्ड स्टेप इज कोन सोइंग। Fourth step is manuring. Fifth step is irrigation. Sixth step is harvesting. And the last step is sending it to sugar factory. तो यहाँ हूँ फॉलोइंग बॉक्सेस को आम प्रॉपर ऑर्डर रे सजाई देले गोटे फ्लो चार्ट केमती बनवा तार। तब चलते जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टे होची कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। सो डाउन ने प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप सेटा कौन कह जाए इरिगेशन। सो ये पोर्शन टारे जो आई अच्छी तो यही पोर्शन टारे आंसर रहिबो इरिगेशन। देन नेक्स्ट पचार कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, that is called as टूर strategy stores एटा होची स्टोरेज एट लेखा जीव स्टोरेज। देन 5 पॉइंट रे दीजी कोन certain plants of the same kind grow on a large scale सेटा को जाय क्रॉप। सो ए 5 नंबर आंसर हबो। सो ये 5 नंबर आंसर हम क्रॉप्स। देन
Question number 3 रे होची a machine used for cutting the matured crop is called as एटी H रे यूज होची सेटा हबो harvester. सेमिति question number 4 a rabi crop that is also one of the pulses एटी लेजी G the answer हबो gram. A process of separating the grain from the chaff is called as एटी देजी W so answer हबो winnowing. आ गोटे आंसर भी हे परिबो threshing so it is called as winnowing. So एटा थिला हमर संपूर्ण एक्सरसाइज रो एनालिसिस. तो आमर चैप्टर 1 क्लास 8 साइंस रो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सरला तापर आमे यार नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा. So please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrikaya Academy. ओडिसा रा सबठार बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पाइबा पई आम चैनल श्रीकाय एकेडमी को सब्सक्राइब करंतु. श्रीकाय एकेडमी रे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. We provide classes for cbse, ICSE, odia medium students class 1 to class 10 and we provide classes for all subject math, science, English, social science, Hindi or Sanskrit including special English and spoken English classes. Our location is Pokariput, Bhubaneswar. Shrikaya Academy ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल Shrikaya Academy. थैंक यू.